రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Now, that's correct. No, that is. I know it is important, but the point is, it cannot be like that. It can only be by. See, listen. It says suo motu statement. If a discussion or clarification has to be allowed now, it has to be by the decision of the House, and all parties should be allowed, all those who want. I cannot allow only one person. Yeah. So we If cannot there do is now. something reported, I will report back. Yeah. Now, I can explain you, but if there is something reported, I will come back. Come again. back. No, Tiruchi, see, if I am allowing, I have to allow everybody. I cannot allow you only, because it's a suo motu. No, don't do that. That's what I am coming to that. Let me see. Tiruchi Siva raised a point. I have to dispose of that. He is also an honorable member like you. Don't be impatient. He is more honorable than you. He is vice chairman. Sit down. Now short duration discussion on the status of implementation of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and the assurances given by then government to House on 20th February 2014 with regard to state of Andhra Pradesh. Sri J.R. Ramesh, you are vice chairman. No, sit down. It cannot be. And in that case, no, I also, honestly telling, I also like to have a clarification and discussion on the suo motu statement personally. But I am saying, I am guided by the decision. So, if that is how you propose such a suggestion, if the House agree, I have no problem. I also personally want. No, but our personal likes and dislikes, no. Yes, Shiva, you can do it tomorrow. See. No, do it tomorrow. Tiruchi Shiva, the statement is very clear. No. J.R. Ramesh. Yeah. Mr. Minister, have you any objection for tomorrow for clarification? I have no problem after Okay, all right. hour. No problem. Okay. 2:30. Tomorrow we'll go. Yes. This is very. 2:30. Kanimozhi ji, I got listen. This is very important. Personally, I also want, but the decision is strong, and you know. So tomorrow we'll go. So that others also will get time. Tomorrow. Because tomorrow 2:30 I can give any clarification. No, tomorrow time will be intimated to you. Kal ho jayega tomorrow. Yes, I will ensure that there is tomorrow. Yeah, I will ensure that. I am also one with you in this. Sir, Yeah. Mr. Deputy Sri Chairman, Jayaramesh. sir. I didn't say anything. Time. I said tomorrow. Why are you doing this? I didn't say any time. No, I didn't say anything. I only said, please. Can I begin, sir? Yeah, please. Mr. Deputy Chairman, sir, we all know that this short duration discussion has come as a result of a belated recognition by the Leader of the House that a private member's bill moved by my colleague KVP Ramchandra Rao on the implementation of the Andhra Pradesh Reorganization Act is a money bill, a position that he took on the 22nd of July 2016 after the President had given his assent and the private member's bill was introduced on the 7th of August 2015. Be that as it may, the agreement was that pending a final decision on whether the private member's bill is indeed a money bill or not, a short duration discussion will take place. And that is why this discussion is taking place. This short duration discussion has two aspects. The first aspect is the status of implementation of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, and the second is the implementation of the assurances given by the then government, by the Prime Minister himself,
on the floor of the House on 20th of February 2014. So I would like to ask the government 5 specific questions on the implementation of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. The first question relates to Section 93. I want to know from the Leader of the House the status of implementation on Section 93, which says the central government shall take all necessary measures for projects in the enumerated 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor states within a period of 10 years from the appointed date. And Schedule 13 lists a large number of development projects for the successor state of Andhra Pradesh, and according to Section 93, the central government has the full responsibility, and I want to know from the Honourable Finance Minister what is the status of this. Second, I would like to know from the Honourable Finance Minister what the status of implementation on Section 94 of the Andhra Pradesh Reorganization Act is. Section 94(1) says, the central government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor states to promote industrialization and economic growth of both the states. And Section 94(2) specifically says the central government shall provide special financial support for the creation of essential facilities in the new capital of the success. So if Mr. Rajiv Shukla can please allow the Leader of the House undivided attention to what I am saying. The central government shall provide special financial support for the creation of essential facilities in the new capital of the successor state of Andhra Pradesh, including the Raj Bhavan, High Court, Government Secretariat, Legislative Assembly, Legislative Council, and other such essential infrastructure. So my second question is, what is the status of implementation on Section 94(1) and Section 94(2)? Sir, my third question relates to Section 84 and 85, which is an elaborate section which I will not quote, but which deals with the management and development of water resources, particularly the creation of 2 boards, the Krishna River Management Board and the Godavari River Management Board, and I would like to know from the Honourable Finance Minister where the government has, what is the status of implementation of this provision. So the fourth question I have relates to Section 90 of the Act, and Section 90 of the Act deals with the Polavaram project, and Section 94 specifically says the central government shall execute the project and obtain all requisite clearances, including environmental, forests and rehabilitation and resettlement norms. I would like to know what is the status of implementation of Section 94. And finally, sir, insofar as the Act is concerned, I would like to know from the Honourable Finance Minister what the status of implementation of Section 46 is. 46(2) says, notwithstanding anything in subsection 1, the central government may, having regard to the resources available to the successor state of Andhra Pradesh, make appropriate grants and also ensure that adequate benefits and incentives in the form of special development package are given to the backward areas of the state. Section 46(3) says the central government shall, while considering, shall, not may, shall, while considering
the special development package for the successor state of Andhra Pradesh provide adequate incentives, in particular for Rayalaseema and the north coastal regions of that state. Short duration discussion is on the assurances given by the then government on the floor of the House on 20th of February 2014. So, on the 20th of February 2014, the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, made 6 assurances with the full knowledge of the then leader of the opposition and the then senior leader of the BJP, who was seated on the front row, who unfortunately is not present here now, Mr. Venkaiah Naidu. This draft, this statement which I am about to read, had been drafted and cleared with both the leader of the opposition, now the leader of the House, and the senior leader of the BJP, now the Minister of Urban Development and Information and Broadcasting. And sir, I would like to read what Dr. Manmohan Singh had said. It's a very brief statement. Mr. Chairman, sir, I have listened very carefully to the views expressed by the leader of the opposition and all the other members who have spoken, especially those from Andhra Pradesh. That is Mr. Venkaiah Naidu. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concerns of all regions of the state, particularly of Seemandhra, which later became the successor state of Andhra Pradesh. I would like to make a few further announcements in this regard, and I would like to draw the Honourable Finance Minister's attention to these 6 announcements. First, for purposes of central assistance, special category status, for purposes of central assistance, special category status will be extended to the successor state of Andhra Pradesh, comprising 13 districts, including the 4 districts of Rayalaseema and the 3 districts of North Coastal Andhra for a period of 5 years. This will put the state's finances on a firmer footing. So when the Prime Minister made this announcement, Mr. Venkaiah Naidu got up, and I have the record of proceedings of the 20th of February. Mr. Venkaiah Naidu said, not 5 years, 10 years. This is Mr. Venkaiah Naidu on record. 10 minutes. Over. Dr. Manmohan Singh said 5 years. Mr. Venkaiah Naidu said, we will come to power, we'll give it for 10 years. Second, the bill already stipulates that the central government shall take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives to the successor states in order to promote industrialization and economic growth in both the states. These incentives will be along those extended to some other states. Third, the bill already provides for a special development package for the backward regions of the successor state of Andhra Pradesh, in particular for the districts of Rayalaseema and North Coastal Andhra Pradesh. This development package will be on the lines of the KBK, the Koraput Bolangir Kalahandi special plan in Odisha, and the Bundelkhand special package in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Fourth, I would like to reassure honourable members, if any further amendments are needed to facilitate smooth and full rehabilitation and resettlement for the Polavaram project, they will be given effect to at the earliest. Our government will execute the Polavaram project, let there be no doubt about it. This stands implemented because one of the first acts that the new government did was to re-promulgate the ordinance and convert the ordinance into a law for the transfer of submerged territories from Telangana to the successor state of Andhra Pradesh. So this fourth stands implemented. Fifth, the appointed day for the formation of the new state will be so fixed in relation to the notified date. This also stands implemented. Sixth, the resource gap that may arise
in the successor state of Andhra Pradesh in the very first year, especially during the period between the appointed day and the acceptance of the 14th Finance Commission by the Government of India, will be compensated in the regular union budget. Sir, out of the 6 assurances given by the then Prime Minister, 2 stand implemented. 4, I would like to request the Honourable Finance Minister to shed some light, particularly the assurance that the successor state of Andhra Pradesh will get special category status for 5 years, to which Mr. Venkaiah Naidu said not 5 years but 10 years. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री नरेश अग्रवाल जी। सभापति जी, मैं भी उस समय हाउस में था। अरुण जी इधर बैठे हुए थे, ये उधर बैठे हुए थे। बहुत दिन एजिटेशन चला सदन में, बहुत दिन एजिटेशन चला। जिन सदस्यों ने चलाया, बड़ी मेहनत करी, उसमें दोनों पक्ष थे। एक कहता था तेलंगाना बने, एक कहता था आंध्र प्रदेश एक रहे। उस समय समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम राज्यों के बंटवारे के विरोध में हैं, लेकिन बंटवारा हुआ और इसी सदन में एश्योरेंस दिया गया कि ठीक है। अभी जयराम रमेश जी बता रहे थे वेंकैया जी ने ये कहा, तो वेंकैया जी प्रधानमंत्री जी नहीं है जो पूरा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात कहे हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था, वहां व्यक्ति का सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो मैं इस पक्ष में हूं कि जो एश्योरेंस दिए गए थे उन एश्योरेंस को लागू होना चाहिए। ये गलत परंपरा पड़ेगी कि सदन में भी एश्योरेंस देने के बाद ये एश्योरेंस। अब मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। स्पेशल कैटेगरी हम लोगों ने भी मांग करी थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबने। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन के मानक क्या क्या हैं, कि कौन मानक पूरा होने पर स्पेशल कैटेगरी का स्टेट माना जाएगा। मैंने हरदम कहा कि मानकों में कुछ बदलाव होने चाहिए। श्रीमान, मानकों में देखना चाहिए कि एरिया उस स्टेट का क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और स्टेट के डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। ये 4 पॉइंट अगर नहीं आपने देखे, आपने नीति आयोग बना दिया, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, चलिए मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन अगर नीति आयोग बना तो नीति आयोग को भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे परिवर्तन करें। तो आज जो हालत है उत्तर भारत के राज्यों की हालत तो उन राज्यों से बहुत खराब है जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में आपने ले रखा है। और मैंने जो मानक कहे, अगर आप इन मानकों को देख लें, इन मानकों के हिसाब से चले, तो ये रवि जी बैठे हुए हैं, ये भी बिहार को मांग करते थे। So the short duration discussion, a number of names have been given. These are the members who have moved the short duration. Shouldn't they be given an opportunity? Yes, they will be given. But his name is not there. No, they will be given. They will be given. ये आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं They will be given. हर पार्टी वाला बोलता है, हर पार्टी वाला बोलता है। You are not the speaker. सब पार्टी वाइज बोलते हैं। जयराम जी, पार्टी वाइज डिस्कशन होता और है। किसी को 1 घंटे का समय नहीं मिलता। मैं कल था नहीं, 1 घंटे का समय भी नहीं मिलता। ये गलतफहमी निकालने में मैं नहीं था, तो 1 घंटे का स्पेशल एक आदमी को समय दे दिया जाए, मैं बिल्कुल चलिए नहीं। नरेश जी बोलिए। बात भी बोल दी नरेश जी, और मुझे नरेश जी, मुझे टोकोगे तो मैं भी बहुत टोकने में एक्सपर्ट हूँ, इतना ध्यान रखना मुझे टोकने में। नरेश जी इधर बोलिए। नहीं, मैं शंकर जी से कहा, मैं कहता हूं कि आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आप पुनर्विचार करके जो राज्य, अगर आपको देश को डेवलप करना है तो खाली प्रधानमंत्री के नारों से देश डेवलप नहीं हो जाएगा। आप नारा दे दे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जी चिकित्सा योजना, प्रधानमंत्री जी स्वच्छ योजना, आप सब प्रधानमंत्री के नाम कह दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना क्या खाली सदन में लागू हो जाएंगी? लागू तो राज्यों में होंगी, और राज्यों में लागू करेंगी राज्य की सरकारें। आप तो राज्य की सरकारों को सिर्फ योजना बता सकते, योजना के नाम से धन दे सकते। तो आखिर आप जब उस राज्य का रिव्यू नहीं करेंगे, आप उस राज्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो देश कैसे डेवलप करेगा और आपकी सोच जो सोच कैसे होगी?
आज मुझे खुशी प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से, और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए। ये दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य है तो दुर्भाग्य भी, मैं दोनों मानूंगा कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर कहीं के हुए तो उत्तर प्रदेश से हुए, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब। ये तो वैसे हुआ चिराग तले अंधेरा वाली कहावत कि हमें इस बात पे खुशी है हम राजनीतिक रूप से बहुत डेवलप हैं। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश बहुत आगे, बड़ी चेतना दिल्ली की सरकार बिना उत्तर प्रदेश की नहीं बनती, क्योंकि 80 MP एक स्टेट से आते हैं। शायद कोई स्टेट इतना बड़ा इस देश में नहीं होगा जिस स्टेट से 80 आते। उत्तराखंड नहीं जोड़ते तो 85 MP आते थे, और उस समय लगता था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब दिल्ली आता तो एक बार दिल्ली हिल ऐसी जाती थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली आया है। आज क्या बात है, लेकिन उतना उत्तर प्रदेश का विकास न होना उतना ही दुर्भाग्यशाली। और कहीं ना कहीं हम लोग भी चिन्हित किए जाते, कहा जाता है कि MP इतने पहुंच गए, MP चाहते तो राज्य की ये दुर्दशा ना होती, राज्य विकसित हो गया होता। केवल MP तो चाहते हैं, हम लोग तो कह रहे हैं, हम तो आज भी सदन में कह रहे हैं, MP सब चाहते हैं कि सारा देश डेवलप हो, साथ में उत्तर प्रदेश भी डेवलप हो, लेकिन ना डेवलप होने के कारण हम सबको तकलीफ है। और मैं कहूंगा सरकार से, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आई हैव सपोर्टेड यू अर्लियर, एंड में भी आपको सपोर्ट करूंगा। मुझे तिरुपति चलना है, कोई ऐसा नहीं है, मैं तिरुपति बालाजी, मैं जाऊंगा तिरुपति बालाजी, तो मैं भी भगवान में विश्वास करता हूं। तो अंत में मैं कहूंगा कि CM रमेश जी बहुत लड़े, चौधरी अकेले मिनिस्टर बन गए, दोनों को जाना चाहिए। हम तो आज रिकमेंड कर रहे हैं कि सहयोगी दल है, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि सहयोगी दल होने के बाद भी अगर इनको अपनी सरकार में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि उस समय की सरकार की वादों को पूरा न करा सके, तो कहीं ना कहीं सहयोगी दल अपने को कमजोर समझ रहे हैं। नहीं तो हमने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के साथ लोकतांत्रिक कांग्रेस की बनाई थी, मैं तो सरकार को रिमोट पे रखता था, जो चाहता था वो कराता था, वही सरकार करती थी। मैंने कब सरकार, मैं सहयोगी दल था, लेकिन सहयोगी दल के नाते पूरा दबाव बना कर रखता था। अब क्या कमी नहीं, चंद्रबाबू नायडू तो बहुत काबिल हैं, उनके बारे में तो कहा जाता विकास पुरुष है, और उन्होंने आंध्र को जितना चाहा डेवलप कर दिया। उस समय यही कहा जाता था कि मॉडर्न इंडिया में अगर कोई भी सबसे ज्यादा तेज चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू है। मैं एक बार उनसे मिला भी था जाके, तो मैं चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के संबंध में जो आपने वादे किए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, और वेंकैया जी उस समय खास तौर से आप यहाँ जब बैठे हुए थे तो आप सबसे ज्यादा बोल रहे थे, और हम लोग समझ रहे थे दक्षिण भारत से आप हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप आज भी उतने ज्यादा बोल दीजिए, और इन लोगों से जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने की घोषणा कर दीजिए। साथ ही साथ जो हमने उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करी है, आप प्रधानमंत्री जी से कह दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, उत्तर प्रदेश का ख्याल रखेंगे तो बहुत दिन उत्तर प्रदेश एहसान मानेगा, और नहीं ख्याल रखेंगे तो उत्तर प्रदेश बदला लेने में भी कभी कमजोर नहीं दिखाई दिया। बस यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूँ। श्री सुखेंद्र राय 2014 में हमको अभी भी याद है। हालांकि लेकिन वास्तव ये है कि कुछ भी हो, ये एश्योरेंस उस समय प्रधानमंत्री जी जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने एश्योरेंस दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और हम मांग करते हैं कि जो एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया, इसको मर्यादा दिया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट। देयर शुड नॉट बी टू ओपिनियन। लेकिन सर जो बात नरेश जी ने अभी उठाया, मैं उनसे भी सहमत हूं कि बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हमारे सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। उन सब राज्यों को जो लोग अपनी विरासत से जो डेट मिला है, डेट बर्डन मिला है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं RBI का एक आंकड़े आपको माध्यम से सरकार से हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। 2016 का मार्च का एक आंकड़े रिजर्व बैंक ने रिलीज किया, उससे पता चलता है नंबर 1 है महाराष्ट्र, उनका डेट बर्डन है 3,79,000 करोड़ से ज्यादा रुपया। उत्तर प्रदेश 3,27,000 करोड़ से ज्यादा, उनको भी विरासत से मिला है, हमको भी मिला है, महाराष्ट्र को भी मिला है। वेस्ट बंगाल 3,08,800 करोड़ का डेट बर्डन। आंध्र प्रदेश
2,62,850 करोड़, गुजरात 2,29,280 करोड़, तमिलनाडु 2,35,260 करोड़, उनको भी विरासत से मिला है। सो अगर इस तरह 10 राज्य है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश है और केरला भी है, तो 10 राज्य की हालत बहुत ही खराब है, जिनका डेट बर्डन है 1,60,000 से 3,80,000 करोड़ तक, इतना डेट बर्डन है। ये 10 राज्य के लिए मेरे विचार से हमारा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि चीफ मिनिस्टर लोगों को बुलाएं और एक रास्ता निकाला जाए, जैसे कि आंध्र को मदद दिया जा रहा है, हम समर्थन में है। वी आर सपोर्टिंग द demands of the Andhra Pradesh as assured by the then Prime Minister. But at the same time, the chief ministers of these 10 states, they should also be called, and their views are to be taken by the government to solve the problem of debt burden. How to get rid of this debt burden? One way should be involved. Otherwise, there will be a serious financial crisis here. And ये लगता है जो एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि 2016-17 में अगर ये डेट बर्डन का मुद्दा, ये समस्या को हल नहीं किया जाए तो ये 10 राज्य की हालत इस जगह पे पहुंचेगा कि ये सरकारी कर्मचारी लोगों को तनख्वाह देने सकेगा कि नहीं सकेगा, इतना दूर तक आर्थिक स्थिति का बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, इसको भी विचार करें। ये 10 बड़े राज्य है, इसमें प्रधानमंत्री जी का राज्य भी है, हमारा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तमिल भी है, केरला भी है, राजस्थान भी है, इतने सारे राज्य। दूसरी बात यह है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 39 मेजर स्कीम को उन्होंने बंद कर दिया, 39 मेजर स्कीम को बंद कर दिया। उसके अलावा 58 इंपॉर्टेंट स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको भी अपना जो शेयर था सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना रिड्यूस कर दिया कि अभी उसका सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों के ऊपर आ गया। सारे राज्यों को ज्यादा पैसा देने पड़ता है उसको लागू रखने के लिए, जारी रखने के लिए। ये हालात पैदा हो गया, इसको ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात है, ये मेरा राज्य है, सबसे पिछड़े हुए राज्य जो है, इसमें सेंट्रल सेल टैक्स का जो हमारा एरिया ड्यू है वो 6,500 करोड़ का, करीबन 6,500 करोड़ रुपया 2011 साल से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये जो एरिया है सेंट्रल सेल टैक्स का, उसको रिलीज किया जाए, ये तो हमारा ड्यू है। ये नहीं कि हमको कृपा करेंगे सरकार, ये हमारा ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा प्रोप्राइटी है ये मिलने का। लेकिन हमें अफसोस है कहने में कि सरकार न जाने किस कारण हमारे सरकार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों ये पैसा नहीं रिलीज कर रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो 6,500 करोड़ रुपया रेवेन्यू लॉस हो रहा है हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और सबसे आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो पे कमीशन का रिपोर्ट निकला है, सेंट्रल पे कमीशन, हर राज्यों में भी पे कमीशन बनाया जाता है और उसका भी रिकमेंडेशन कुछ राज्यों में आ गया, कुछ राज्यों में आने वाला है। उसके लिए बहुत सारे राशि हमको जुगाड़ करने पड़ता है। तो अगर हमको थोड़ा बहुत मदद नहीं मिलेगा और सेंट्रल पे कमीशन अपने नोट छपाते हैं, वो लोग करेंसी नोट छपाते हैं और दे देते हैं। हमारे पास तो नोट छपाने का कोई मशीन है नहीं, राज्यों को पास। कलकत्ता में सिर्फ नहीं है, आपका चेन्नई में भी नहीं है, आपका आंध्र में भी नहीं है, आपका महाराष्ट्र में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। ये अरुण जेटली जी का डिपार्टमेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। तो नासिक में है, महाराष्ट्र में है और हमारे बंगाल में एक बनाया गया था, वो बंद हो गया। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, बंद हो गया। सर, तो मैं ये हंसी मजाक का बात नहीं है, सीरियस बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो समस्या ये जो मुद्दा मैंने उठाया आपके माध्यम से, मैं सरकार से निवेदन करूंगा इसको हल करने के लिए सीरियस थॉट होना चाहिए। हर एक राज्य में 10 राज्य का नाम लिया,
इस 10 राज्य का आर्थिक हालात इस जगह पे पहुंच गया कि अगर इस आर्थिक वर्ष में ये समस्या का हल नहीं किया जाए तो बहुत ही बुरा हालत पैदा हो जाएगा और ये देश के हित में नहीं होगा, देश के हित के खिलाफ होगा। और मैं आंध्र प्रदेश के जो डिमांड है उसको अंतर से मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री अली अनवर अंसारी। प्रिया महोदय, श्री माननीय सदस्य श्री जयराम रमेश जी ने जिस बहस को इनिशिएट किया है और पूरे तफसील में इन्होंने बताया है कि उस समय की सरकार के क्या कमिटमेंट थे, तो अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग इनके इस बात का और इस मांग का हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। महोदय, एक नीति है कि हर इंसान को अपने कौल का पक्का होना चाहिए और वक्त का पाबंद होना चाहिए। अब ये तो एक इंसान की, एक फर्द की, एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये तो एक सरकार की बात है, एक प्रधानमंत्री की बात है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री दूसरा आ जाए, लेकिन इनको ईमानदारी से इस बात को करना चाहिए। महोदय, जिस समय मैं भी इस हाउस में था, ये डिवीजन हुआ, पुनर्गठन हुआ 2 राज्यों का, और जो विवाद चल रहा था रोज रोज, तो उसमें एक नायडू साहब भी थे और इधर से भी लोग थे, तो दोनों तरफ से एक कंपटीशन था कि कौन ज्यादा इनकी मांग का समर्थन करता है, कौन ज्यादा, हम 5 साल लेंगे तो हम 10 साल तक इसको सुविधा देंगे, नायडू साहब हैं। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपना पुराना वादा इनको याद रखना चाहिए और सिर्फ ये चुनाव के लिए और वोट के लिए नहीं होना चाहिए। वहां तो पुनर्गठन हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का भी बंटवारा हुआ है, बिहार भी पिछड़ा है और बिहार में एक लंबी लड़ाई विशेष राज्य के दर्जे के लिए हुई और लंबे समय तक हुई। उस समय रवि बाबू हैं, ये लोग, हम लोग एक साथ सरकार में वहां थे, हम लोग सब लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे थे बिहार राज्य को विशेष सुविधा देने की बात। और हमारे नेता नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार राज्य की बात कर रहे थे, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि जो भी पिछड़े राज्य हैं वो पुराने जो तरीके पिछड़ेपन के तय किए गए हैं उसमें बदलाव करके जो सभी तरह के पिछड़े राज्य हैं, बंगाल में है हमारा पड़ोसी, झारखंड भी पिछड़ा हुआ है, उड़ीसा भी पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ है, जो भी राज्य हैं एक नीति बना करके और सब लोगों को सहायता दी जाए। हम लोग बिहार के लिए भी मांग कर रहे थे और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करा करके ट्रक में लाद करके यहां उस समय की सरकार के हवाले किया गया उस समय। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री जी, चुनाव आया, मौजूदा प्रधानमंत्री जी बिहार में गए और उन्होंने ये वादा किया कि हम विशेष सुविधा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, मुजफ्फरपुर में कहा सभा में कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम सरकार में आएंगे। तो ये सारी बातें कही गई, बीजेपी के लोग भी कहते थे, लेकिन वो सारी बातें हवाई साबित हुई। तो इस तरह की बात हम कहना चाहते हैं महोदय कि जो भी आप रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट, जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है, अभी हैं गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक सिफारिश तय की थी। आप बताएं कि उस सिफारिश के दिशा में आप कौन सा कदम बढ़ाए हैं, आगे कौन सा कदम बढ़ाए हैं। हमारा स्टेट जो बिहार है वो एक लैंड लॉक स्टेट है, हमारा कोई समुद्री किनारा नहीं है, हमारी आबादी कितनी घनी है और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, उस आधार पर और हमारे साथ सदियों से ब्रिटिश पीरियड से लेकर के और आजादी के बाद भी
भाड़ा समानीकरण से लेकर के और हर मामले में हमारे राज्य को नजरअंदाज किया गया। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन की बात नहीं मानी जाएगी? जहां तोड़फोड़ होगी, जहां हिंसा होगी, उसकी बात को आप मानेंगे, और जहां शांतिपूर्ण ढंग से सिग्नेचर कैंपेन करा करके बड़ी बड़ी यही रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, लाखों लोग, बिहार के लोग लाखों लोग आए और दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन दिलाते हुए और जनता की चेतावनी को याद दिलाते हुए इनके मांग का हम समर्थन करते हैं कि हूबहू जो भी कमिटमेंट किया गया है आंध्रा के साथ या तेलंगाना के साथ, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Shri Sitaram Yechuri ji. Thank you, sir. I rise here today to demand the implementation of the assurances given on the floor of the House on that day. And with that demand, sir, with also the request that I hope there are Telugu interpreters today. Are they? Yes. Secretary General, are they Telugu? Yes, sir. Simultaneous translation? Oh, good. నాకు ఇప్పటివరకు జ్ఞాపకం ఉంది, వెంకయ్యనాయుడు గారు మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు నేను ఆ రోజు చాలా ఘర్షణ పడ్డాం. ఏ రోజైతే तेलुगु में सुन रहा हूँ इतने दिन से हाउस में, अभिनंदन। शुक्रिया। और पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे रविशंकर साहब तेलुगु भी समझते हैं। यार आ रोज మాట్లాడుతూ మేము ఒక్కరమే పార్టీ, మా మార్క్సిస్ట్ పార్టీ ఆ విభజనని వ్యతిరేకించాం. సిద్ధాంతరచిగా మా ఉద్దేశంలో విడకుండా ఉండాలని సిద్ధాంతరచిగా మా పార్టీ తీసుకున్న వైఖరి. ఆ వైఖరికి అనుకూలంగా మేము దాన్ని ఆ రోజు వ్యతిరేకిస్తూ ఇక్కడి నుంచి వాకౌట్ చేసే ముందర మాట్లాడుతూ ఆ సమయంలో తొందరపడుతున్నారు ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నారు, వాళ్ళు తొందరపడుతున్నారు. ఐ రిమెంబర్ టెలింగ్ సార్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద హోమ్ మినిస్టర్ వర్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెన్. ఐ సెడ్, సార్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు వాక్ ఆన్ 2 stools. You will end up falling between both the stools. And that is what happened when the next elections came. But that's a separate matter. That's not what we are discussing today. But ఆ రోజున మాట్లాడుతూ గురజాడ అప్పారావు గారు, మీకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది వెంకయ్యనాయుడు గారు, గురజాడ అప్పారావు గారిని కోట్ చేస్తూ నేను అన్నాను, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్. ఆ మనుషులకి అభివృద్ధి కోసమని మీరు చేస్తున్న పని అది సహకరిస్తుందా లేదా, అది సహకరించదు అనే విశ్వాసంతో నేను ఆ రోజునే అన్నాను, మీరు ఇస్తున్న వాగ్దానాలు ఏంటి, మీరు ఆ రోజు ఇస్తున్న అష్యూరెన్సెస్ ఏంటి, వాటిని మీరు అమలు పరుస్తారా లేదా, ఇప్పటి వరకు మీ వైఖరి ఏదైతే చూస్తూ వచ్చామో దానికి ఆధారంగా అది మీరు అమలు పరిచారనేది స్పష్టం అవుతుంది. కానీ ఏ వాగ్దానాలు చేశారు ఆ రోజుని? ఈ విభజన వల్ల 2 ప్రాంతాలకి నష్టం రాకుండా చూస్తాం. 2 ప్రాంతాలకి, తెలంగాణలో వెనకబడిన ప్రాంతాలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్థిక సహకారం మేము ఇస్తాం. దానికోసం ప్రణాళికంగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది, మన కేంద్ర ప్రభుత్వం. రెండో వైపు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆ రోజుల్లో సీమాంధ్ర అనేవారు దాన్ని, ఆ పేరుతో వచ్చింది. ఆ సీమాంధ్ర కోసమని కొన్ని వాగ్దానాలు చేశారు. ఇందువల్ల వాళ్ళ రెవెన్యూ ఏదైతే షార్ట్ ఫాల్ వస్తుందో ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ని తట్టుకోవడానికి. కానీ ఆ సమయంలోనే హెచ్చరిక ఇచ్చాను నేను, ఏమని, అయ్యా విద్యుత్ సమస్య, విద్యుత్ పంపకం ఏ రకంగా జరుగుతుందో దాని గురించి మీరు ఆలోచించలేదు. నీటి పంపకం మీకు అర్థమవుతుందని, మీకు కూడా అర్థమవుతుందని నేను ఆ రోజుని ఈ నీటి పంపకం, విద్యుత్ పంపకం, ఈ విధంగా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, వీటి గురించి లోతుగా ఆలోచించకుండా ఈ పని చేయొద్దు అని హెచ్చరికించాం. లేదు, దాని గురించి మేము ఆలోచించి దాని గురించి కావాల్సిన డెసిషన్స్ మేము తీసుకుంటాం అనే ఆశ్వాసన ఇచ్చారు. నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం, వెంకయ్యనాయుడు గారు అక్కడ ఉండి ప్రభుత్వం 5 ఏళ్ళు అంటుంది, కాదు మేము 10 సంవత్సరాల వరకు ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ని ఇస్తాము అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజునే అనౌన్స్ చేశారు. 2 సంవత్సరాలు దాటిపోయాయి. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది? మొదటి బడ్జెట్లో
ఏ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ వస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్ని కాంపన్సేట్ చేస్తామని వాగ్దానం ఇచ్చారు. మొదటి బడ్జెట్ అయిపోయింది, రెండో బడ్జెట్ అయిపోయింది, ఇప్పటివరకు ఆ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్కి కాంపన్సేషన్ ఇప్పటివరకు ఏమీ జరగలేదు. సో ఇవాళ మేము అడిగేది సూటిగా, రెండు ప్రాంతాలకి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని వాటిని మీరు అమలుపరుస్తారా? అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంది, వాటిని అమలుపరచండి. దానికోసమే ఇవాళ ఏ విధమైన మళ్ళీ తిరిగి ఆ అష్యూరెన్స్ మీరు ఇస్తున్నారా, లేక ఆ వాగ్దానం మీరు చేస్తున్నారా? అది ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వానికి. అది అనౌన్స్మెంటే కాకపోతే నా ఉద్దేశంలో, మా పార్టీ ఉద్దేశంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా రెండు ప్రాంతాల నుంచి దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజా ఉద్యమాలు మళ్ళీ బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మన దేశం యొక్క ఐక్యతకి, సమైక్యతకే నష్టం. దీనివల్ల అక్కడ ప్రజలకి వాళ్ళ మీద ఆర్థిక భారాలు ఏవైతే పడుతున్నాయో అవి పరిష్కారం కావు. భవిష్యత్తు కూడా ఏ ప్రాంతంలో అయితే మనం ఐటీ క్యాపిటల్ అన్నామో, సైబరాబాద్ అన్నామో, దేన్నైతే మనం ఇవాళ మన దేశంలో అభివృద్ధి కోసం కొనసాగుతున్న ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రాంతం ఉన్నామో అదంతా వెనకబడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల నేను ఇవాళ స్పష్టంగా కోరుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ కోరడమే కాదు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెడుతున్నాను. ఈ వాగ్దానాలు ఏవైతే చేశారో అది 2 సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోయాయి. కానీ ఇప్పటి నుంచి దాన్ని అమలు పరచడానికి మీరు సూటిగా, నిర్దిష్టంగా ఏ విధంగా అమలు పరుస్తున్నారో దానికి నిర్దిష్టంగా మీరు ఆ ప్లాన్కి ప్రకారం వచ్చి పార్లమెంట్లో అనౌన్స్ చేసి దాన్ని అమలు పరచాలి. రెండో ఆఖరి విషయం చెప్పదలుచుకున్నది, यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने ये उठाया बाकी प्रांतों का, बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, केरल का, ये सब बातें आए, वो उसके बारे में भी बिहार का, तमिलनाडु इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है. लेकिन सवाल सर यहाँ पे ये है कि ये जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है और तेलंगाना और वो बाइफर्केशन जब हुआ, सवाल ये था कि जो आश्वासन इस सदन में दिए गए, सरकारें बदलती रहती, ये इधर है वो उधर है, ये दोनों मिलके उस दिन जो किया वो किया, लेकिन आज जो भी है सरकार, उस सरकार को जो आश्वासन दिया गया उसको लागू करना जरूरी है जहाँ तक उस प्रांत के लिए. बाकी सवालों के बारे में भी विचार करिएगा, ये जरूरी है. So therefore finally sir, with your permission, if you don't mind, there is only one thing I'll try to draw the attention to the leader of the house. This discussion This discussion, sir, is taking place because the private members' bill, it was considered that was a money bill. But, sir, I'd like to just point out to you and to a publication brought out by the Rajya Sabha Secretariat, 2013, September 2013, on private members' legislation. And I think this is necessary for us also to remember. It's a very short passage, please permit me. It says, this is concerning private members' bill, which may be outside the legislative competence of the House and therefore may be considered as ultra-virus. The issue came up first in 1953, soon after I was born. And at that point of time, the Deputy Chairman ruled that such matters cannot be discussed in the House because they may be ultra-virus. Matter was subsequently settled by Dr. Zakir Hussain, sitting as the chairman in the chair in 1963. And when such an instance came, I quote what is the observation he made as the chairman of the Rajya Sabha. Prima facie, quote, sir, prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling because the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. Then he says, the main reason for adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is a function of the court and ultimately of the Supreme Court to decide on such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he does not have the facilities, etc., etc. If the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately the Supreme Court. The question came up before the central legislature on various occasions and the accepted practice has been stated by me.
unquote, Dr. Zakir Hussain. So समाप्त that कीजिए। objection to that private member's bill saying it is a money bill was not a valid objection. I still do not think it's a valid objection. The discussion should have gone on. We should have decided on the ठीक है, matter. ठीक है। And if there is any dispute, the courts will decide it ultimately. Thank you, sir. ఆఖరిలో ఇదే ఆశ్వాసన మీరు మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాలి. మీరు చేసిన వాగ్దానాన్ని అనుభవ్ మహంతి థ్యాంక్ యూ సార్.